हेलो स्टूडेंट्स, ये एएमयू बीएससी नर्सिंग 2025 क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में आप कुछ आंसर बताने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, जिससे हम आप सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस एग्जाम्स की बता सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ईयर 1986। Second question, which of the following pairs of gases are mainly responsible for greenhouse effect? The correct answer is option D, carbon dioxide and methane. Third question, is the correct answer is option B, aromatherapy. Fourth question, which of the following is not a natural disaster? The correct answer is option D, biological warfare. Fifth question, which leader of nursing profession was known as the lady with the lamp? The correct answer is option A. Sixth question, special doctor for treatment of cancer patients is known as? The correct answer is option A. Seventh question, which hospital or department unit is responsible for care of ill children till 15 years? तो इसका correct answer है option D. Eighth question, frostbite can be best described as? तो इसका correct answer है option D, true tissue freezing. इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, which department of hospital provides lodging, diet and medical care? तो इसका correct answer है option A. 10th question, the most important purpose of hand washing is? तो इसका correct answer option B, to prevent transfer of microorganisms. 11th question, इसका correct answer है option A, pressure ulcer. 12th question, इसका correct answer है option A. 13th question, COVID-19 is caused by which microorganisms? तो इसका correct answer option B, virus. 14th question, body cleanliness, physical exercise, rest and sleep are parts of? तो ये part है personal hygiene के, option A यहाँ correct हो जाएगा. 15th question, dressing and bandages are used to? So correct answer है option C, help control external bleeding and prevent infection. 16th question, which of the following are the benefits of recreational therapy for students? तो इसका correct answer है option C, both A and B. 17th question, accepted standard duration of sleep for an adult is? तो इसका correct answer option C, 8 hours. 18th question, neurologist is a medical specialist who deals with disease of? This is the correct answer option C, brain and spinal cord. 19th question, typhoid fever could be confirmed by which diagnostic test? This is the correct answer है option B. 20th question, इसका correct answer है option A, elevate legs above heart level. Question number 21, what is the electric field at a distance r from point charge q in a medium with dielectric constant k? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 22, द पावर्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव 5d, इट्स फोकल लेंथ इज? तो फोकल लेंथ हो जाएगी ऑप्शन ए, 0.2 मीटर. इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, a concave mirror has a focal length 10 cm, object is placed at 15 cm from the mirror, the nature of the image formed is? तो जो नेचर होगा इमेज का वो होगा रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड. ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा. Question number 24, the wavelength of an electromagnetic wave in a medium with refractive index this is given by? So correct answer है option A. Question number 25, इसका correct answer है option B. Question number 26, the magnetic dipole with a magnetic movement this is placed in a uniform magnetic field of strength B is equal to 2 Tesla if the angle between dipole movement and field is 45 degree. What is the potential energy of dipole? तो इसका correct answer है option D, -6√2 joule. Question number 27, the value of magnetic field B inside a long solenoid having length L with a n turns per unit length and carrying a current I given by? इसका correct answer है option C. Question number 28, इसका correct answer होगा option B, 0.104 meter. Question number 29, what is the force acting on a charged particle Q moving with velocity v vector in a magnetic field B? तो इसका correct answer है option C. Question number 30, the capacitance of a parallel plate capacitor depends on? So correct answer है option D, area of plates, distance between them and dielectric constant of medium. Question number 31, two lenses of focal length 20 cm and 40 cm kept in contact, the combined focal length will be? तो combined focal length होगी option D, 40/3 cm. Question number 32, इसका correct answer है option C, electron and holes being created in pairs. Question number 33, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.58 into 10⁻21 meter cube inverse. Question number 34, an electron is accelerated through a potential difference 100 volt. The de Broglie wavelength of electron is approximately? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.23 एम्पियर, सॉरी 1.23 एंगस्ट्रॉम.
क्वेश्चन नंबर 35, 2 point charges are placed 50 centimeter apart in a vacuum. The magnitude of force between them is. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ऑप्शन बी 0.216 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 36, a circuit has a 10 ohm resistor connected in parallel with 15 ohm resistor. The combination is connected to 12 volt DC battery. Power dissipated in each resistor is. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 14.4 and 9.6 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 37, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 38, a particle with charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is moving with velocity. This is a magnetic field. The force acting on it is. तो जो फोर्स एक्ट होगी उस पर वो होगी ऑप्शन ए 1.6 into 10 to the power minus 19 into 19 I cap minus 14 J cap plus K cap न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 39, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 50.99 ओम. Question number 40, a light of wavelength 600 nanometer is incident on a single slit of width 0.15 millimeter. The angular position of second minima is. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 0.458 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 41, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 42, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 523 into 10 to the power minus 4. Question number 43, for a mixture of volatile liquids A and B, delta H and delta V are positive, mixture will show. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोलर लॉ. Question number 44, in first order decomposition, a substance starting initially is equals to 2m becomes 0.2 m after 100 minutes. Time of the reaction is. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 30 minutes. क्वेश्चन नंबर 44, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ग्लूकोज. क्वेश्चन नंबर 46, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शन विद n इक्वल्स टू 2 इज फाउंड टू बी दिस. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन वुड बी. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा आपका ऑप्शन बी 10 to the power 5. क्वेश्चन नंबर 47, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर. क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एसिडिक. तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो हाईली एसिडिक होती हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर मॉलिक्यूल. तो इनमें से जो लीनियर मॉलिक्यूल है वो है आपका ऑप्शन बी N2O. सॉरी. तो ये थे आपके 50 तक के क्वेश्चन के आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर.